Al Habibi, welcome to the Kitty Party live from Dubai. Well, मैं इस वक्त हमारे दिल्ली के स्टूडियो में हूँ. मेरा नाम है आरजे राहुल माकिन, लाइव फ्रॉम फीवर स्टूडियोज न्यू दिल्ली. और दिल्ली जो कि गढ़ है दिल्ली कैपिटल्स का, हम सबकी निगाहें हैं आज दुबई की तरफ, क्योंकि वहां पर हो रही है हमारी मेगा किरी पारी, जिसे कहते हैं हमारी आईपीएल ऑक्शन. वेल, इस बार दिल्ली में खरीद फरोख्त करने के लिए काफी ज्यादा रकम है. ऑफ कोर्स तभी हम दुबई गए हैं. इनफैक्ट अगर हम हमारे रुपयों को दिरहम में भी कन्वर्ट कर दें तो भी बहुत ज्यादा पैसा है हमारे पास. वेल, इस वक्त हमारे पास इस पैनल में इस बारे में डिस्कशन करने के लिए कौन कौन है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर द रियल ऑक्शन बिगिंस. पर ऑक्शन से पहले थोड़ा एक्शन हो जाए. मेरे साथ है मेरे दोस्त सैम काशरू, who is founder of Cross Border Cricket. Hi Sam, how are you? I'm well, Rahul bhai. How are you doing? Superb. हमारे साथ है बाबाशीष नंदा, who is a cricket commentator. Hi बाबाशीष, how are you? राहुल भाई कैसे हैं आप? बस सबसे बेहतरीन. आप बहुत कलरफुल लग रहे हैं आज. और नीला रंग बहुत कम दिखाई दे रहा है पर कोई बात नहीं. प्रणव गांधी हमारे साथ है, who's the founder of Spotify with PRG. Hi Pranav. Hi Rahul. Good afternoon, everyone. How are you guys doing? Superb. And हमारे साथ है स्वामी देव सरकार, who's the founder of Six Pack and Sixers. Hi Swami. Hi, it's great And to we be here. have Superb. हमारे साथ है विभू वार्ष्णे एके दिल से पनीर. जाने माने कमेडियन है. हम इन्हें मैं खुद इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ. इनकी वीडियोस बहुत अमेजिंग होती है. विभू भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भाई. राहुल भाई आप कैसे हो? एकदम बेहतरीन. तो आज हमारा ये पैनलिस्ट हैं जो कि आपको फन से लेके फैक्ट्स तक सब कुछ बताएंगे. तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रणव के पास. प्रणव, आपको क्या लगता है टेक बैक्स फ्रॉम द लास्ट सेशन, लास्ट ऑक्शन से कोई एक सीख जो हमने ली हो? Well, I think most DC fans want to forget about last season. I'm going to be as brief as I can be regarding last season. But look, I think there are some learnings from it. One of the things that you look at, which I think will be glaring to anyone, is that when you have your second highest run scorer as Akshar Patel, it is not a good sign. That statistic is not just alarming; it is actually frightening. So I think that that's one thing that is a learning, that you have a David Warner at the top of the order, you have a Mitchell Marsh in the team, but I think that support staff of the Indian batting did not quite work out the way I think that DC had hoped. So that's something, of course, that they will address, and we can talk more about that later. The second thing, of course, is the absence of a good wicketkeeper batsman with Rishabh Pant's unfortunate injury, and I think that his presence on the field and off the field is just so strong that it was a good sign to see him on the DC Capitals Insta handle, and a good to see him in Dubai today. So good to see that. But I think that that's something they need to focus on, because every good team has a good wicketkeeper batsman, and I think it's very important for the IPL for that. And finally, the last takeaway, I guess, is again, sorry DC fans for taking you down this path, but they lost their first 5 games last year, and when you lose your first 5 games, you are on the back foot. You start questioning your selection, you start questioning your playing 11, and that's when you run into trouble. So I think one of the things that you want to take away this year is that when you are doing the auction, you want to develop a depth chart, so that for each position you have 2 to 3 players. You do your auction in that manner, and so that if someone's out of form or someone gets injured, you have your next man up. Right. So I think that's an important takeaway from last season, because if you're chasing the top four, you're always in trouble. So you kind of want to be in that mix a little bit. And those are 3 big takeaways I would say from last season, though. Great. I'll have the same question from Sam, Vigo and Vishal, but उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसके पास कितनी जगह है, किसके पास कितनी रकम बाकी है. इसमें तो भाई जो टेबल पे टॉप कर रहे हैं वो एक गुजरात टाइटंस, जिनके पास 8 स्लॉट खाली हैं, 2 विदेशी स्लॉट खाली हैं, एंड दे हैव अराउंड 38.15 crores left in their pocket. Sunrisers Hyderabad are at number 2,
6 स्लॉट्स उनके पास खाली हैं, 3 विदेशी स्लॉट्स हैं, 34 करोड़ उनके पास बाकी हैं। कोलकाता नंबर 3 पे है, इनके पास 32 करोड़ बाकी हैं। चेन्नई के पास 31 करोड़, पंजाब के पास 29। उसके बाद आती है हमारी दिल्ली। मुझे लगता है कि यार दिल्ली कैपिटल्स पिछली जितनी 4-5 ऑक्शंस जितने मैंने देखी हैं, उनमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इस बार का पर्स है 28.95, यानी कि ऑलमोस्ट 29 करोड़ रुपए। बहुत ज्यादा पैसा है जी इस बार तो हमारे पास। और उसके बाद आता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 23, मुंबई इंडियंस सिर्फ 17 करोड़। उसके बाद आरआर जिनके पास 14 करोड़। सबसे एंड में आते हैं लखनऊ जिनके पास 13.51 करोड़ बाकी है। द सेम क्वेश्चन मैं सैम आपसे भी पूछना चाहूंगा। टेक बैक्स फ्रॉम द लास्ट ऑक्शन और द लास्ट सीजन। राहुल भाई, पिछला सीजन तो मतलब फॉरगेटेबल ही था। आई मीन मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स प्रणव ने एक्चुअली काफी कवर करे हैं, बट I'd like to add on to a little bit to what he said कि आई थिंक 13 बड़ा अजीबोगरीब नंबर बन गया था फॉर दिल्ली, क्योंकि पृथ्वी शॉ की एवरेज 13 थी और सरफराज खान की भी एवरेज 13 थी। ये दोनों मुंबई के प्लेयर हम दिल्ली लेके आए। दोनों ने, एक ने कोई 53 रन मारे, एक ने 106 मारे पूरे सीजन में। रिपल पटेल को 4 मौके मिले, पोरेल को 4 मौके मिले, यशदुल को 3 मौके मिले। तो मौकों को कन्वर्ट नहीं करा, मौके पे चौका नहीं मारा काफी लोगों ने यहां पर। बट अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा longer run is needed to be given. I think we need to work on it practically. I think the coaching staff there obviously is far wiser than what we are put together. So I'm sure they'll be able to action this better. And the other thing is, दिल्ली की पिच चेंज हो रही है। लास्ट ईयर भी चेंज मैंने देखा वहां पर, क्योंकि हमारे जो 2 स्पिन ट्विंस हैं, अक्षर एंड कुलदीप, दोनों ने टोटल मिला के कोई 24 विकेट्स ली है, विच इज नॉट इनफ बिटवीन द 2 बिग विग्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये दोनों इंडिया के लिए खेलते हैं एट द सेम टाइम। सो दिल्ली की पिच चेंज हो रही है। सो इस ऑप्शन में प्लीज लेट्स गो अहेड एंड आई थिंक लुक एट सम पेसर्स। दिल्ली विकेट इज चेंजिंग। बिल्कुल। विभू भाई, आपने लास्ट सीजन भी देखा है, इनफैक्ट आप स्टेडियम भी गए थे देखने के लिए, है ना? तो आपने सब कुछ बहुत करीब से देखा है, करीब से नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है, और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैंने आपकी रील्स में भी देखा है। तो आप बताएं जी, लास्ट के ऑक्शन से, लास्ट के सीजन से क्या टेक बैक्स दिल्ली कैपिटल्स इस बार ऑक्शन में लेना चाहेगा? राहुल भाई, मैंने ऑब्जर्व करा कि हमारा जो बैटिंग एक एवरेज जाता है वो 150 प्लस जाता है। ठीक है, तो एक रन रेट मान के चलो अब 8 का चल रहा है, लेकिन अगर विकेट्स की बात करूं तो ऑन एन एवरेज हमारा 5 या 5 से कम विकेट जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विकेट्स हमारे हाथ में नहीं आ पा रहे थे पिछले सीजन, जो कि बहुत क्रूशियल रोल है। विकेट्स लेना बहुत जरूरी है, वरना सामने वाला तो मारे गई। तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार को 150 160 हम लोग होल्ड कर सकते हैं, पर विकेट्स लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, विकेट्स लेना बहुत जरूरी है। Vishal, the same question goes out to you as well. Take backs from the last season. So, Rahul bhai, when Pranav and Sam were talking about the disastrous season that the men's team had at the Delhi Capitals, मेरे मन में मैं खुश हो रहा था क्योंकि I was only following the women's team and they were outstanding in the previous season, right? They actually were runner-ups in the WPL. But again, it was just an off day on the 26th of March against the Mumbai Indians in the finals. But otherwise, if you look at throughout the tournament, the performance was fabulous. And of course, why not? You know, they are led by one of the very successful captains that we have in the women's circuit, which is the Meg Lanning. So they have got all the boxes covered. अगर मुझे IPL, WPL auction से पहले किसी ने पूछा होता, which is that one team that does not need an auction, my answer would have been Delhi Capitals, because they have their openers sorted, they have their middle orders sorted, they have their bowlers sorted. So this is that one team in my opinion that did not need an WPL auction again, because the kind of that they have built in the previous season. So honestly, मेरे लिए the WPL first season it was brilliant. One off day, but again I'll take that on any given day. True, absolutely, absolutely. Coming on to our next question, क्योंकि of course अभी बाकी है ऑक्शन, अभी बाकी है लाइव आईपीएल का एक्शन, तो अभी जो हम जिस बारे में बात कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आवर लर्निंग्स फ्रॉम द लास्ट सीजन। डीसी किन जगहों पे बेटर कर सकती थी? सैम, आपको क्या लगता है? देखिए, डीसी सबसे पहले तो मेरे ख्याल से
हमारी बैटिंग हैज फेल्ड। अगर हम पिछले सीजन की बात कर रहे हैं राहुल भाई, तो पिछले सीजन आई थिंक द बैटिंग वाज अ मेजर इशू, एज आई सेड प्रीवियसली ऑल्सो। एक तो स्टार्ट बुरा रहा, मतलब पहले आप 5 गेम अगर हारोगे तो क्या सीजन में रिकवरी करोगे? दैट्स दैट्स द स्टार्ट। प्लस आई रियली जेन्युइनली बिलीव द लॉन्गर रन नीड्स टू बी गिवन टू एवरीवन। यंग टैलेंट को हमने नर्चर करा है, एंड यू नो दे हेल्ड ऑन टू पृथ्वी शॉ इस साल भी। मतलब DC is investing into Prithvi Shaw as a long-term player, just like how at the point in time करा गया था with the likes of Virat Kohli with RCB or with other people, you know, who have stayed with franchises for longer periods. So मेरा टेक बैक यही है कि आई थिंक जो यंगस्टर्स हैं उनको इनफ मौका मिलना चाहिए इस साल, ताकि वो अपने अपने कुछ रंग दिखाए, बिकॉज कब तक क्विक फिक्सेस करते रहेंगे? आई थिंक सोल्यूशंस ना ढूंढे, कुछ लॉन्ग टर्म ढूंढे जो आप ग्रो करेंगे विद द फ्रेंचाइज। एब्सोल्युटली। बाबा, आपसे भी यही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि व्हाट दिल्ली कैपिटल्स कुड हैव डन बेटर लास्ट सीजन? और भाई सैम ने जो अपना पहला पॉइंट रखा था पिचेस के बारे में, उसको लेके एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़े से बेटर पिचेस हाँ जरूर जी दें अपने I think there's some technical glitch. कोई बात नहीं. We'll move on to our next panelist. सोमी से पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स और क्या बेटर कर सकती थी लास्ट? तो आपको अडैप्ट करके जाना पड़ेगा कि आप स्लो पिचेस के ऊपर किस हिसाब से आप बल्लेबाजी कर सकते हो। और जो इंडियन कोर की बात सैम कर रहे हैं ना, उनको भी ये समझना पड़ेगा। देखिए पृथ्वी शॉ सरफराज, इनको अरसा हो गया है यार अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने के लिए। तो ये नहीं आप कह सकते कि अच्छा 3 मैच 4 मैच एनफ नहीं है। शायद हो सकता है कि हाँ जैसे CSK करता है कि हमने आपको पिक किया तो पूरा सीजन खिलाएंगे, वो मेंटालिटी भी नहीं हो। तो फिर 7-8 गेम का एक रन मिलना चाहिए, जो कि मैं एब्सोल्युटली सहमत हूं उस चीज से। लेकिन हाँ, बेटर पिचेस नहीं होंगे तो आप दुनिया भर के हिटर्स ले, आप मार्श, रूसो, ये सॉल्ट, पावेल, किंग को भी खिला लो, अगर घुटने से ऊपर बॉल उठ नहीं रही है तो ये नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी बेटर पिचेस एंड ऑफ कोर्स जिन प्लेयर्स को हमने सिलेक्ट किया है उनको कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है कि हम आपके साथ हैं, उन्हें ज्यादा मैचेस खिलाना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट ही हैज टू से। एब्सोल्युटली। विभू भाई, आपसे भी यही सवाल है, डीसी पिछले साल क्या और अच्छा कर सकती थी? भाई मेरा अगेन वही मैं बोलूंगा कि बॉलिंग यूनिट अगर हम जैसे कि स्टार्टिंग में अगर हम विकेट्स निकाल लें तो प्रेशर बिल्ट हम पे नहीं होगा, सामने वाले पे होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जहां अगर हम पहले 5 ओवर या 3 ओवर में भी अगर हम 2 विकेट्स पे निकाल लेना, पूरा गेम बदल सकते हैं हम, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें प्रेशर शिफ्ट करना है। जैसे आपसे भाई ने बताया कि पहले 5 अगर हम मैचेस हारे तो प्रेशर हम पे हो गया। सिमिलरली अगर हम इंडिविजुअल मैच की बात करें, अगर स्टार्टिंग के 3 से 4 ओवर अगर हमारे पे पावर हिटर काम कर रहे हैं तो हम ही फिर बैकफुट पे चले जाएंगे। जहां हमारे पेसर्स ने, यूजुअली पेसर ही डालते हैं स्टार्टिंग के ओवर, जहां हमारे पेसर्स ने विकेट्स अगर हमें दे दी तो सामने वाले के ओपनर गए, क्योंकि वो भी पावर प्ले का फायदा उठाते हैं, हिटिंग मारते हैं, 30 यार्ड पार कराते हैं। जहां वहां पे वो लोग बैकफुट पे गए, हमारे पे बहुत एडवांटेज होगा जीतने का। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमेनिंग ऑक्शन पर्स। हमारे पास इस बार बहुत अच्छा पर्स है, काफी ज्यादा पैसे हम लेके गए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जब दुबई जाए शॉपिंग के लिए तो पैसा ज्यादा होना चाहिए हमारी जेब में। तो स्वामी, आपको क्या लगता है कि इस इतने खतरनाक बड़े पर्स से कितना एक्शन एक्सपेक्टेड है इस बार? ये पर्स तो खतरनाक है ही, लेकिन खरीदने भी हमें बहुत सारी प्लेयर्स है। 9 प्लेयर्स हमें फिल करने हैं, 4 ओवरसीज कोटा खाली है, और तो खर्चे काफी आने वाले हैं। और आपने अपना मिडिल ऑर्डर भी एकदम खाली कर दिया है, तो वहां भरने के लिए भी हमें पैसे चाहिए। तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि डेफिनेटली हमें मिडिल ऑर्डर को तो फोर्टिफाई करना ही पड़ेगा। वी डेफिनेटली नीड अ फिनिशर, ये दोनों तो एकदम अनक्वेश्चनेबल है। उसके ऊपर से आपको एक बैकअप विकेट कीपर भी चाहिए, क्योंकि पोरेल है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट यू विल नीड समवन देयर। एक बैकअप ओपनर की जरूरत है, क्योंकि पृथ्वी शॉ अगर वापस से इस साल उसी वैसे ही वाले फॉर्म में रहे,
तो वार्नर को डेफिनेटली वी नीड समवन टू बैकअप वार्नर, अदरवाइज अकेले वार्नर करेंगे ही क्या। तो वो एक पॉइंट है। दूसरे एंड पे आपका बोलिंग अटैक ठीक ठाक है, पेस बोलिंग अटैक ठीक ठाक है। Whether they come to the party or not, that's another question that we need to answer. But at the same time, एक दो पेसर, एक दो डोमेस्टिक पेसर होना अच्छी बात है। वैसे इस साल जैसे हम बाकी सारी टीम्स को देख रहे हैं, वहां पे सबको डोमेस्टिक पेसर्स की जरूरत है, तो उनका तो एकदम बोलबाला होने वाला है इस बार। लाइक दे विल गो विद फ्लाइंग कलर्स, बट यहाँ पे भी डीसी को भी चाहिए एक दो अच्छे पेसर्स। डेफिनेटली कुछ ऑप्शंस तो अवेलेबल है ही, बट या आई थिंक पैसे है, लेकिन खरीदारी करने की भी सामान बहुत है हमारे पास, तो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ज्यादा भावनाओं में मत बहिएगा एंड ऑफ कोर्स लॉजिकली चूज कीजिएगा। वेल बिल्कुल सही कहा सोमिनी कि एक अच्छा ओपनर हमें उसकी बेहद आवश्यकता है, बेहद जरूरत है। और अगर बैट्समैन की बात करें तो मैं बहुत लालची हूं एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू हैव रचिन रविंद्र विद अस दिस टाइम। पता नहीं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आई डोंट नो हाउ वुड डीसी अप्रोच इट। एंड रचिन रविंद्र इज समबडी वी वुड लव टू सी इन द ब्लू एंड रेड जर्सी। आगे बढ़ते बाबा, आपको क्या लगता है, इतना बड़ा पर्स है इस बार, व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस एक्शन एंड ऑक्शन? थोड़ा सा स्मार्ट होके चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपके पास फाइनेंस इतना तो पैसा नहीं है, क्योंकि वो आएंगे ऐसे उड़ाएंगे पैसे, उनके पास जितना पैसा है उनको फिल भी करना है बहुत बड़ा एक स्पॉट हार्दिक पांड्या वाला। लेकिन जितना पैसा है दिल्ली कैपिटल्स के पास उतना इनफ है ये स्लॉट भरने के लिए, अगर आप थोड़े से स्मार्ट मूव्स करें तो। जैसे अभी उन्होंने मेंशन किया कि उनको एक बैकअप कीपर तो चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को, तो आप बैकअप कीपर के लिए अगर कोई, ऑब्वियसली अगर आप फॉरेनर ढूंढ रहे हैं या फिर कोई ऐसा बड़ा नेम ढूंढ रहे हैं तो आपको बड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे जिन्होंने परफॉर्म किया है, जिनके पास थोड़ी सी एक्सपीरियंस है, एक नाम लेना चाहूंगा, सुमित घाड़ीगांवकर था इस पैनल में से, उनको शायद देखा होगा। मुंबई के प्लेयर हैं, अब जाके आसाम से खेलते हैं, उनको अभी मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो सुमित घाड़ीगांवकर ऐसे एक प्लेयर हैं जिनको आइडिया है इन पिचेस का, इन कंडीशंस का, वो लेवल पे वो खेल चुके हैं। तो थोड़े से स्मार्ट पिक्स करने पड़ेंगे। ओपनर की बात की स्वामी ने की, और बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बैकअप ओपनर आपको वहां पे चाहिए, तो वहां पे आपको चाहिए समबडी लाइक रोहन कुनुमल, जो कि केरला की तरफ से टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं। उनको एलएपी में मैंने बहुत देखा है, व्हाइट बॉल में बड़े छक्के मारते हैं, लंबे खेलते हैं। तो ये जो है कि थोड़े से अगर स्मार्ट पिक्स करने जाए, फास्ट बॉलर की आपको जरूरत है, इंडियन फास्ट बॉलर तो सब दौड़ेंगे, आपको शार्दुल ठाकुर सबको चाहिए, हर्षल पटेल सबको चाहिए, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको यू हैव टू लुक एट समबडी लाइक अ मुख्तार हुसैन, जो कि टॉल है, जिनका आर्म स्पीड बहुत ज्यादा है, दो बाउंसर्स अलाउड है राहुल भाई, ये बहुत बड़ी बात है इस सीजन की। तो फास्ट बॉलर्स का बोलबाला इसलिए भी ज्यादा रहेगा कि जैसे ही दो बाउंसर्स अलाउड हो जाते हैं ना, आप मिडिल ओवर में आके स्क्वायर लेग, फाइन लेग पीछे रख के, थर्ड मैन डीप पॉइंट रख के आप बहुत डैमेज कर सकते हो। तो इसीलिए थोड़े से स्मार्ट पिक्स करेंगे तो फिर दिल्ली के लिए अच्छा रहता है। प्रणव, आपसे भी यही सवाल है। अब 28 करोड़ मतलब 29 करोड़ के करीब का इस वक्त पर्स है, सो क्या एक्सपेक्टेशंस है दिल्ली से इस बार? So firstly, let me just say about the auction. It has become one of the most exciting sporting days in the sporting calendar. Okay, because it is so much fun and what is going on. See, the auction has evolved so much over the years where it's gone from just being a science to being an art. Okay, and if you don't look at the art angle of it, you're going to mess up the auction. There are certain teams in the north, I won't mention it, but you can bet that they always mess up the auction. Now, what I'm going to say is that it's very important as a strategy, and I think Baba talked a little bit about it, is how to bid, when to bid. Sometimes you bid and just prop up the price so that the other team uses their purse, even if you don't want the player. And that becomes more important, I think, than a little bit of difference in your purse. If you play the auction well, and most importantly, when to withdraw your bid, if you play the auction well, I think you can do a lot of damage and make a lot of splash. I think Somi and Baba talked about the middle order that's required and the players that are required. A couple of young guys, what you want to look for, especially with the middle order, and if you're tight on the budget, you want to look for hidden gems, right? Because वो player है auction में. A couple of names, Priyansh Arya, Delhi State के लिए खेलते हैं, Sameer Rizvi और Swastik Chikara. These are all batsmen that are not well known, but if one out of the three even work out for you, पूरा सीजन चेंज हो सकता है. Rachin Ravindra, I think to your point,
Rahul, I think he's going to go for the highest in the auction. To be honest with you, more than Travis Head, more than anyone else. So don't know if Delhi has the budget, but I think if they can prop up the price and let someone else spend a lot of money, they could get some other real good picks in the auction. Sam Curran, I think, was the highest bought player last year, 18.5 crores, if I'm not wrong. So प्रणव ने तो अपना आंसर दे दिया है. I'll ask everybody in the panel. ये अचानक से पॉप आउट हो गया क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस साल आपको क्या लगता है ऑक्शन में सबसे महंगा प्लेयर कौन जाएगा? So yes, we'll start. विभू भाई, आपको क्या लगता है? भाई मेरे को लगता है ट्रेविस हेड, जैसे आपका वर्ल्ड कप गया है उसका, और प्लस वर्ल्ड कप के बाद जो टेस्ट मैचेस में उसने परफॉर्म करा, वनडे में परफॉर्म करा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेविस हेड है जो फोड़ेगा इस बार. Okay, Sam, what do you have to say? I think this is a bowler's auction, clearly. Because Travis Head, yes, बिल्कुल सही बोला अभी विभू भाई ने, बिल्कुल मतलब no doubt about that. मगर एक इशू है कि majority of the teams के पास ऊपर के बैट्समैन ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो उनको वो पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है. दैट इज द ओनली इशू. ये डिमांड सप्लाई की गेम चल रही है यहाँ पर. टैलेंट जाएगा हाईएस्ट बेड. यहाँ पर जेराल कुड्जी पे आप नजर रखना. दैट गाय इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मनी. Bowlers will rake it in, and someone like शाहरुख खान will. अभी मैं एक और पॉइंट मेंशन करना चाहता था. हम दिल्ली की पिच की बात कर रहे थे. So I've closely followed Delhi cricket over a period of time, and having played there also a lot, I've realized that the Firozshah Kotla or Arun Jaitley Stadium now, उसकी पूरी pitch is now relaid, and अब वो पाटा ट्रैक, छोटा ग्राउंड है. आप इस बार 180 से 210 के बीच हर मैच में बनने वाला है इन द फर्स्ट 4 मैचेस जो वहां खेले जाएंगे. Very nice. So I would, if I'm DC, I would look at my finishers very desperately and fast bowling all-rounders who bat. Shardul Thakur for DC. तो हमारे पास तो आई थिंक काफी पर्स है. हम फॉरेनर्स भी ले सकते हैं. सो आई थिंक पैट कमिंस इज अवेलेबल और स्टार्क भी अवेलेबल है. तो और ऑफ कोर्स दोनों एंड पे जाके बहुत अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं. वर्ल्ड कप भी जिता के आए हैं, तो काफी ज्यादा प्राइस टैग वो भी लेके आएंगे, पैट कमिंस और मिथ स्टार्क. देखते हैं कि हम दिल्ली कैपिटल्स में कौन इनमें से ले पाते हैं. स्वामी, आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू यू. आपको क्या लगता है इस बार ऑक्शन में सबसे ऊंचा प्लेयर कौन जाएगा? I'll go with Pranav. I also feel that Rachin Ravindra will be the guy to look out for. The sole reason being कि वो young है and he will be a kind of a guy whom any of the team would want to be a part of their squad in the longer term. काफी sorted लगते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है Rachin Ravindra will be one of the sought after guys. But I also agree with Sam from the point of view कि this is a bowler's auction. और वहां पे कोई एक इंडियन बॉलर, स्पेशली इंडियन बॉलर्स, अगर कोई एक बॉलर बहुत हाई प्राइस पे जाएगा, I will not be surprised about that. So yeah, Rachin Ravindra and probably one of the Indian bowlers is something that I'll look forward to. I mean, यार आप अगर सैम करन को 18.5 करोड़ पे रख सकते हो, तो एक अच्छा खासा इंडियन बॉलर पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. तो and that's where the beauty will lie. बाबा, आपसे भी सेम क्वेश्चन है. आपके ख्याल से कौन सबसे ऊंचा इस बार, कौन सा सबसे महंगा प्लेयर बिकेगा? जी, पहले तो एक बार ये पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की तरफ देखना छोड़ दे दिल्ली के फैंस, क्योंकि वो नहीं मिलने वाले. उनको नहीं जाने देंगे. जिनके पास ज्यादा पैसा है वो उन्हीं के साथ जाएंगे. लेकिन बार बार ये कहूंगा कि देखिए, शार्दुल ठाकुर जैसा प्लेयर है या वो टेम्पलेट वाला प्लेयर जो 4 ओवर सीम अप कराएगा और आपको 6 पे भी बल्लेबाजी कर ले, 7 पे भी बल्लेबाजी कर ले, ये प्लेयर्स बहुत वैल्यूएबल होने वाले हैं. अब क्योंकि आपके पास वैसा उस तरीके का पर्स नहीं है, तो आपको अगेन आपको इंडियन ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे जो कि ये कर पा रहे हैं, रादर देन लुक फॉर अ ओवरसीज प्लेयर. आप पैसा लेके जा सकते हो. और एक और बड़ी चीज है कि somebody like रचिन रविंद्र को अगर आप ले लेते, तो अगेन मोस्ट ऑफ द टीम्स के पास टॉप ऑर्डर पैक्ड है. तो फिर वो प्लेयर को भी आपको पिक करना है जो शायद जैसे ट्रेविस हेड हो गया या फिर रचिन रविंद्र हो गया, कि दे शुड बी सूटेबल, कि वो मिडिल में आके भी खेल सकते हैं. ऐसे वन डायमेंशनल प्लेयर्स नहीं लेके जाएंगे टीम्स जो कि पता है कि ये नंबर 1 खेलेगा या 2 खेलेगा. हमारे पास तो ऑलरेडी है.
तो ये तरीके के बॉलर्स ऑप्शन होने वाला है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। और शार्दुल ठाकुर शायद बहुत प्राइस चले जाएंगे, वो लॉर्ड है, वो कुछ भी कर लॉर्ड ठाकुर, बिल्कुल। विशाल, आपका क्या कहना है, सबसे महंगे प्लेयर्स पर कौन बिकने वाले? Honestly, Rahul bhai, so I very closely follow the WPL Women's Premier League. और मेरे लिए WPL when it comes to DC, it has always been very simple and sorted. 18 players थे in the first season, out of which they got rid of 3 players. उसमें से भी वापस से 3 player और add हो चुके हैं. तो for me it has always been very simple, sorted. But now when I'm part of this panel discussion, I realize that there are lots of ifs and buts. There are a lot of permutations and combinations that you guys are thinking of. So वैसे ही WPL में क्विक एनालॉजी वी वर थिंकिंग कि डियांड्रा डॉटिन, चमारिया टापटू विल बी द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर एंड प्रोबेबली विल अट्रैक्ट द हाईएस्ट बिड इन द ऑक्शन. अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि एकदम ही उसका अपोजिट हुआ. तो यहाँ पे भी ऑनेस्टली आई कैन सी रचिन रविंद्रा इज अ कॉमन नेम दैट इज पॉपिंग अप. Again, my personal favorite also, considering the form that he is in. Also, he can bat, he can bowl, so provides a lot of options to the franchisee. So again, if I had to pick only one player, I would go with Rachin. Rachin. All right. See, a lot of focus is, of course, on the Delhi Capitals and a lot of other teams, जिसमें काफी ज्यादा shuffle भी हुआ है. A question which is, of course, not from the context of this auction, but of course because IPL aa raha hai, and we would definitely want to see our arch rivals Mumbai Indians head to head. तो वहां पर एक चीज जो बहुत I would say अजीब हुई है, but yes, something which we were not expecting, change in leadership. So yes, anybody can answer. आपको क्या लगता है, was this a wise decision to change the captain, or how will it affect this IPL? Can I go? Yeah, go on. Yeah. So I think I don't know if that's the wise decision or not. वो तो यार एक ना एक टाइम पे वो ट्रांजिशन होना ही होता है. But the way this happened, definitely that attracted a lot of glare. Now I am not the best, the biggest fan of Mumbai Indians, but saying that only because of the fact that they are too strong. But coming back to the fact that how does this affect my Indian dressing room? So I think I am more concerned about that, because we have seen cryptic messages coming out from Bumrah, coming out from Sky. There will be Hardik is of course in the scheme of things for the India white ball captaincy. Rohit has been a stalwart. So I am more concerned about how this affects my Indian dressing room rather than what happens to exactly to Mumbai Indians. Coming back, I think this could have been done better rather than this, whether it's the right decision or not to go ahead with. Yeah. Okay, next question would be to Sam. What do we need to focus on this auction? Coming to Delhi Capitals once again. जैसे आपने कहा कि इस बार बोलर्स की ऑप्शन ज्यादा होने वाली है, वी नीड टू एक्चुअली फोकस ऑन बोलर्स, और वही ज्यादा बिकेंगे. हमारी टीम में अगर हम बात करें तो एक बार हम दोबारा से टेबल देख लेते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है. तो अभी का जो स्क्वाड है, अभी का जो हमारा 16 मेंबर स्क्वाड है, वो मैं आपको बता देता हूँ. हमारे पास बैटर्स हैं, पंत हैं, वार्नर हैं, शॉ हैं, डल हैं एंड पॉरेल हैं. ऑलराउंडर्स में हमारे पास अक्षर पटेल हैं, ललित हैं, मार्श हैं. स्पिनर्स में हमारे पास कुलदीप हैं जो बहुत अच्छा फॉर्म कर रहे हैं अभी ओवरसीज भी, प्रवीण हैं, ओसवाल हैं. पेसर्स में हमारे पास ऑफ कोर्स हमारी पेस बैटरी है, नोकिया, गिरी, मुकेश, तीनों ही बहुत अच्छा फॉर्म कर रहे हैं, खलील हैं एंड ईशान. सो सैम, आपको क्या लगता है कहां पे इस वक्त हमें फोकस करने की ज्यादा जरूरत है? आई थिंक हमें एक इंडियन बॉलर डेफिनेटली चाहिए. विद एंगीडी एंड नोकिया आप काइंड ऑफ कवर्ड हो, अगर कोई ज्यादा इंजरी ना हो, मगर नोकिया हैज बीन इंजर्ड क्वाइट अ बिट लेटली आल्सो. सो दैट इज वन बिग प्रॉब्लम. बट वी नीड अ फिनिशर एंड वी नीड अ बैकअप फॉर ऋषभ पंत, बिकॉज चाहे ऋषभ पंत खेले ये सीजन, आई डू नॉट एंटिसिपेट कि वो पूरा सीजन बिहाइंड द स्टंप कर पाएंगे. आई मीन इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो हमारे को बहुत और ऐसे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे जहां पर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं. और अगेन आई एम अ फर्म बिलीवर, अगर दिल्ली को लॉन्ग टर्म सोचना है, बैंडेड नहीं लगाना है,
तो लुक एट सर्टन प्लेयर्स लाइक, आई मीन बहुत बातें हुई है, बहुत प्लेयर्स ऑलरेडी उनकी बातें हो रखी है, बट कोई लाइक समीर रिजवी की बात हुई है, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है लेटली, मगर एक प्लेयर है हार्दिक देसाई फॉर एग्जाम्पल, ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आप उसका डोमेस्टिक सर्किट खोल के देखोगे तो सैयद मुश्ताक में 67 की एवरेज पे बंदा बैट कर रहा है 7 इनिंग में, राइट? 42 उसकी एवरेज है विजय हजारे में। इज अ डिसेंट प्लेयर। और एक और प्लेयर है रमनदीप सिंह, गुड प्लेयर बोथ। उसकी बात हमने अभी तक नहीं करी है, बट वी नीड ऑलराउंड। आई एम गोइंग ऑन स्ट्रेसिंग, 7 गेम हमने दिल्ली में खेलनी है, और दिल्ली के पिच ट्रस्ट मी चेंज हो गया। वर्ल्ड कप देख लो 2023 का, सडनली जो ग्राउंड जहां पर 200-250 का रन इनफ होते थे, इस बार 400 पड़े हैं बार बार, और ऑलमोस्ट चेस भी हुए हैं। वो पिच चेंज हो गई है। सो आई होप यू आर वॉकिंग इन विद दैट मेंटालिटी, या 200 रन पड़ेंगे, तो हमें उस टाइप के अकॉर्डिंग टीम बनानी है। एंड विकेट टू विकेट, लेकिन अक्सर का रोल बढ़ने वाला है फॉर दिल्ली फॉर श्योर, बिकॉज स्टंप टू स्टंप जाते हैं। Absolutely. सैम ने बात करी है दिल्ली के ग्राउंड्स की, फिरोज शाह कोटला की, अरुण जेटली स्टेडियम की। ऑफ कोर्स जब वहां पर हम मैच देखने जाते हैं, वाइब एकदम अलग होती है। इट्स ऑल कवर्ड ब्लू, बहुत मजा आता है। विभू भाई, आप भी लास्ट टाइम आपने मैचेस देखे वहां पर, आप कैसा वाइब रहता है स्टेडियम के अंदर? भाई बिल्कुल ऐसी फील। फॉर एग्जांपल आप इंडिया गेट गए हो अपनी फैमिली के साथ, लेकिन अगर आप इंडिया गेट गए हो स्कूल की ट्रिप पे, तो बिल्कुल वैसी फील आती है जैसे आप स्कूल की ट्रिप पे जा रहे हो। सारे सेम कपड़े, सबकी वाइब सेम, सबका ऑलमोस्ट एज फैक्टर तो मैटर नहीं करता क्रिकेट के अंदर, लेकिन जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल सेम, कि दिल्ली को सपोर्ट करने जा रहे हैं। इतने बढ़िया परफॉर्मेंस होते हैं मैच से पहले, फिर उसके बाद चैंटिंग्स वगैरह ये सब, और एक प्रॉपर हमारे जो सेक्शन होता है ना डीसी टोली का, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे ग्राउंड के अंदर जो रोप है, रोप के उधर तो 12 खिलाड़ी खेल रहे हैं, पर रोप के इधर हम 13 प्लेयर हैं, जो बहुत बढ़िया फील देती है। वाह वाह, क्या बात है। Pranav, my question to you would be that this time I have noticed a very strange, very peculiar thing. We just started, I think, this season only. जैसे पहली बार कैंप्स लगते थे, प्लेयर्स के कैंप्स लगते थे सीजन से पहले, बट इस बार ऑक्शन के प्री ऑक्शन कैंप्स लगने शुरू हो गए हैं. So how do you see this? Yeah, it was very interesting. With something new, I think I don't know how much it's going to impact the auction and the choices they make. I think there are a couple of things that you can look at. One is, like I said, if you can find that, you can find those hidden gems, right? जो surprise player, जो famous नहीं है, किसी का नाम नहीं है, but if you can find it, first you keep your mouth shut. Okay, you don't talk about them, and then you buy them for as low as you can. So one is to look for those hidden gems. The second is you can assess certain fitness things. I know we're 3-4 months away, but maybe you can assess that certain players still need to get fit by the time the season comes in, and maybe you may feel that, look, I don't think this player is going to be match ready by the time the IPL begins, so I may need to auction and bid for a certain player. Is it going to impact the auction strategy a lot? I don't think so. But if you can find some hidden stars and cash in on them, then you can take advantage of this. Pranav, I would love to ask another question, जो भी सैम ने इनका मतलब आंसर कर ही दिया था almost. How does Rishabh Pant look like to you? Because he looks fine. हम उनकी वीडियोस देख रहे हैं रेगुलरली ऑन इंस्टाग्राम, वर्किंग आउट, रिकवरिंग, और बहुत ज्यादा वो रिहैब में दोबारा से he has been performing really well, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. अभी ऑक्शन में भी दिखाई दिए हैं लुकिंग फिट, बट विल ही प्ले इज अ बिग क्वेश्चन. और अगर वो पूरा आईपीएल नहीं खेलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ replacement are we looking for? So that's the all-important question, isn't it, Rahul? Is what is the status of Rishabh Pant? Yesterday on DC Capital's Instagram account, they showed a short clip interview of his. He said, "I'm at 80%." Now, I don't know how to define 80%. We have a few months to bridge the gap and bridge that 20% gap. I'm sure that the DC team and management and Rishabh Pant himself has a strategy on how to get match fit. Because it's one thing to be match fit,
to be fit, and then the other is to be match fit. They're two separate things altogether. The other question also, when someone comes from a long layover and long break, is they may be fit, but do they have their nick and their timing? We never know, right? I think that was a concern before the World Cup about Rahul and Hardik. They were coming back from injuries. So this one concern is there. I'm kind of tend to agree with Sam a little bit on this. I think that he may not play all 14 games. So you need to have a good wicketkeeper batsman, preferably an Indian wicketkeeper batsman. And I think that is very important, because see, there are two things that are common among teams that do well in the IPL. Number one is they have good Indian players. Okay, because you need a good Indian squad. You can only play 4 foreigners. And the second thing is the wicketkeeper batsman, whether it be Joss Butler, Ishan Kishan, Quinton de Kock. Over the years, even if they don't keep, you need that option. So I'm with Sam. I think you need to keep that in mind when the auction is in process. But I hope to see Rishabh Pant back. I mean, not just for DC, but just for cricket fans. You know, his spirit is fantastic. His attitude is fantastic. It was tragic what happened to him, and nothing would make me happier this IPL than to see him back on the field. We would love to see him play for India as well. हम बहुत मिस कर रहे हैं. Yes, Sam has something to say. Around my two things. One, as Pranav was talking, मेरे दिमाग में आया, there's a boy called Urvil Patel. Okay. गुजरात टाइटंस ने उनको रिलीज करा है. अच्छा. और ये अभी 100 मार के आ रहे हैं एट द विजय हजारे ट्रॉफी. 150 की स्ट्राइक बैटिंग करी है और दबा के रन मारे हैं. T20 में भी बहुत अच्छा करके आए लेटली, राइट? सो दैट्स वन ऑप्शन. KS भरत वगैरह तो है ही, बट अननोन नेम में अगर हम जाते हैं तो डेवलपेबल टैलेंट. There's one more person. When I talked about Shardul Thakur, which came to me much later, I was quiet since then. I wanted to stress on. इस लड़के को मैंने देखा है for the last 3 years. He's in the IPL auction. I've seen him very closely. Arshin Kulkarni. Okay. Now, he's played under 19 Asia Cup and he has been man of the match 2 out of the 3 games. ये इंडिया वर्ल्ड कप खेलने पक्का जाने वाला है. He's slated to Hardik Pandya. Wow. If Delhi buys him now, at this stage, it will be a phenomenal investment. 20 लाख या 30 लाख के रिजर्व में आएगा. अभी ले लो, बेटर है. क्या बात है. So अगर अभी ले लेते हैं तो हमें बुर्ज खलीफा जैसा रिटर्न्स मिलने वाले हैं, ऐसा सैम का कहना है. So we would definitely should eye for Mr. Kulkarni. One more news which I just heard a few days back was that BCCI is also contemplating on starting a T10 league. So just as if it is an assumption, just presume कि ऐसा होता है. So दिल्ली कैपिटल्स भी एक टीम T10 की खरीदती है, तो उसमें कौन कौन से प्लेयर्स अगर अलग से खरीदे जाते हैं तो कौन कौन से प्लेयर्स आपके फैंटेसी 11 में होंगे? विभू भाई से स्टार्ट करते हैं. कौन कौन से प्लेयर्स आप रखना चाहेंगे सिर्फ T10 अगर हो तो? भाई मेरे ख्याल से तो T10 अगर रखना है, 4 पेसर रखो, 6 पावर हिटर रखो, मारो. मतलब विभू भाई कह रहे हैं कि विभू भाई ये कह रहे हैं T10 यहाँ पे जैसे हम देखते हैं ना, ओपनर 1, ओपनर 2, नंबर 3, ये ग्राफ्टर. T20 में फिनिशर 1, फिनिशर 2, फिनिशर 3. एग्जैक्टली. बट एक चीज जो है सैम की बात पे बेहतरीन पॉइंट था, जो 2 नए प्लेयर्स के बारे में बात की. एक और नाम ऐड करना चाहूंगा. अभी छत्तीसगढ़ में था डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करते हुए, और मैंने देखा उनके जो ओपनिंग बैटर हैं अमनदीप खरे, वो खरे उतरे उस पूरे टूर्नामेंट में और बेहतरीन बल्लेबाजी की. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. अगर आपके पास जितने पैसे हैं ना, उतने आप ये जो प्रणव बार बार कह रहे हैं हिडन जेम्स, इनकी बहुत अहमियत है अभी. 30 लाख 20 लाख वाले जो प्लेयर्स हैं, इनको आप पिक करें, इनको फिर एक लंबा रन आप दें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता. ये सारे प्लेयर्स के लिए एटमॉस्फेयर थोड़ा सा डिफरेंट होगा. बट हाँ, T10 हो जाए तो फिर यही करें, फिनिशर 1, फिनिशर 2. We are actually looking forward. जब थोड़ा सा बीच में टाइम बचता है ना, बिकॉज अप्रैल से लेके मई तक, मार्च से लेके मई तक सारा बुक्ड होता है. उसके बाद फिर हल्का सा टाइम बचता है, तो अगर T10 स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बाद तो क्रिकेटिंग सीजन पूरा साल चलता ही रहता है. सो T10 would India would definitely love to see a T10 on Indian soil. बहुत मजा आएगा. एंड ऑफ कोर्स वो एक अलग ऑप्शन होगा फिर
हम दोबारा से मिलेंगे, बट अभी जब मिले हुए तो थोड़ा सा मजा करते हैं. लेट्स हैव अ रैपिड फायर with all you guys. We start with Pranav. ठीक है, प्रणव आपसे स्टार्ट करते हैं. जल्दी जल्दी I'll ask you some questions. First buy of DC. An unknown player, someone player that is not a household name. So I don't have a name for you. Most expensive buy for DC. Most expensive buy for DC. Okay. Oof. I think they're going to get one of the three players that is left in the auction. I think maybe a Harry Brook they may just pull off. Okay. Most expensive international buy. And that would be Harry Brook as well. Yeah. Okay. Most expensive domestic buy. I would say maybe Shardul is in the auction, right? Yes. Yeah, I would say a Shardul. I would say a Shardul maybe. All right. Okay, we go to Sam. Sam, same questions. Number one, first buy of DC. फर्स्ट बाय आई डोंट नो पहला सेट में आई थिंक हैरी ब्रुक वगैरह आ रहे हैं. सो फर्स्ट बाय सो द सेट वन इज आई थिंक एज आई अंडरस्टैंड हैरी ब्रुक, ट्रेविस हेड, करुण नायर इन दैट सेट. सो आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री. आई थिंक वी नीड हैरी ब्रुक. हमारे पास बैटिंग का इशू है. हैरी ब्रुक. All right. Most expensive buy for DC. Most expensive buy for DC. I wish we can buy Gerald Coetzee or Dilshan Madhushanka based on form. Super. Most expensive international buy. That would be the same actually. It would be a bowler. We need a good bowler. Most expensive domestic buy. Most expensive domestic buy. I haven't thought of that. मेरे ख्याल से हर्षल पटेल if we get him. और one of bowlers भी आएगी कहानी. Okay. विशाल आपसे पूछता हूँ, फर्स्ट बाय ऑफ डीसी कौन होने वाले हैं? You're on mute, Vishal. Am I audible now? Yeah. I think very difficult to predict that, but I will go with what Pranav and Babashi said. I think Harry Brook should be looked at. Most expensive buy for DC. Can't comment. Very difficult. Can't comment. Most expensive international buy and domestic buy. I think with domestic, I would definitely say Harshal Patel. Again, given the form that he has, international very difficult to comment. All right, super. We'll go to Vibhu bhai. First buy for DC. सबसे पहले मैं तो यही चाहता हूँ कि ओपनर उठा लो, या तो रचिन या फिर ट्रेविस. बहुत जरूरत है. और बाकी टीम की अगर बात करें तो उनके पास पेयर है ओपनर के. हमारे पास ओपनर हमें चाहिए जो वार्नर को बैक कर सके, तो इसलिए मैं इन दोनों में से कोई एक चाहता हूँ. क्या बात है. सबसे महंगा प्लेयर डीसी के लिए कौन जाएगा इस बार? मैं कह रहा हूँ डीसी उठा ले ट्रेविस हेड को, मजा आ जाएगा. परफेक्ट. सबसे महंगा इंटरनेशनल प्लेयर, सबसे एक्सपेंसिव भाई, सबसे एक्सपेंसिव इंटरनेशनल पहले क्या कुछ भी जा सकता है, क्योंकि ये फिर से टक्कर आ गई रचिन की, ट्रेविस की. इन काफी प्लेयर्स हैं जो टॉप 3-4 हैं जिन पे निगाहें हैं सबकी. बिल्कुल. एंड अगर डोमेस्टिक प्लेयर कोई खरीदना हो, सबसे महंगा कौन सा जाएगा? भाई मैं भी पटेल ही बोलूंगा कि पटेल अच्छा फॉर्म है. आगे सौमी, सेम क्वेश्चंस फॉर यू. फर्स्ट बाय ऑफ डीसी. कंसिडरिंग इट विल बी अ बैटर और सब लोगों ने ब्रुक बोला है, तो मैं ट्रेविस हेड बोलती हूँ. ओके, ट्रेविस हेड. मोस्ट एक्सपेंसिव बाय फॉर डीसी. सेम, nobody can match Travis Head's figure this year. Most expensive international buy and domestic buy. It will be a bowlers IPL auction. So Mitchell Starc, and I being an RCB fan, I know how much money we will have to spend for him. Okay. Super. And I think Baba is left. Baba से पूछते हैं, first buy for DC. ये जो सेट नंबर 1 और 2 की बात हो रही है ना, जो सैम कर रहे थे, इन पे बहुत पैसा खर्च होने वाला है. तो वहां पे अगर दिल्ली बिड कर रही है तो फिर दे विल पिक somebody who's slightly lesser in terms of their abilities, but अगर
बड़े प्लेयर की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे. आई वोंट बी सरप्राइज इफ दे ट्राई टू ब्रिंग बैक समवन लाइक मनीष पांडे, बाय हिम बैक. हो सकता है ही कुडंट बी द बेस्ट, ही वोंट बी द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर, बट आपके पर्स के हिसाब से आपको वो मिल जाएंगे. मुझे भी सबके हिसाब से मुझे भी लग रहा है कि ट्रेविस हेड ही सबसे महंगा प्लेयर जाएगा. मोस्ट एक्सपेंसिव बाय फॉर डीसी आपके ख्याल से? Yes, Sam, I'll come to you. DC will try and get a all-rounder, fast bowling all-rounder. उस पे वो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे. तो इसीलिए जो जिस तरीके से बाकी सबने भी कहा कि हर्षल पटेल हो गए या फिर उस तरीके का एक रोल वाला बॉलर. मोस्ट एक्सपेंसिव इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बाय. एक प्लेयर. ओ सॉरी. No, it's okay. Sam, go on. You're saying something. No. I was just trying to come up with. मेरे दिमाग में अभी कोई आया प्लेयर जिसके बारे में मिलके बात नहीं करी है, उसको भूल कैसे गए. डैरिल मिचेल. डैरिल मिचेल ने सेट 2 में आ रहे हैं एंड माइकल ब्रेसवेल. नाउ इन दोनों ने इंडिया में आके अभी इस वर्ल्ड कप में भी मिचेल ने आई थिंक 2 सेंचुरी मारी थी. एक इंडिया बहुत अच्छा टेम्पलेट उनका है सैम, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. एक जो टेम्पलेट होता है ना, आप सबकॉन्टिनेंटल बैटर के बारे में बात करते हैं, वो सबकॉन्टिनेंटल बैटर की तरह ही खेलते हैं, इसलिए डिफरेंस पता नहीं चलता. हाँ जरूर डैरिल मिचेल एक ही इज अ फैंटास्टिक पिक, लेकिन सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगे, जैसा कि हम सब एग्री करते हैं कि बॉलर ही होने वाले हैं, तो वो मिचेल स्टार्क हो जाते हैं, पैट कमिंस हो जाते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहेगा. चलिए जी, अब फोकस जाने वाला है कुछ ही मिनट्स में. आई थिंक वी हैव जस्ट 1 minute, about 1 minute left. Let's orient ourselves towards the big screen जहां पे अब auction is just about to begin and हमारी सारी speculations बस अब देखते हैं कितनी सही होती हैं, कितनी ऑलमोस्ट सही होती हैं और कितनी गलत साबित होती हैं. हम एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे आफ्टर दिस फर्स्ट ब्रेक ऑफ द ऑक्शन एंड लेट्स सी हमने जो प्लेयर्स खरीदे हैं या नहीं खरीद पाए, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ एंड हाउ डिड इट ऑल गो आफ्टर द फर्स्ट ब्रेक. अब सीधे लिए चलते हैं आपको टुवर्ड्स द ऑक्शन. Thank you very much, gentlemen and ladies. It was lovely having you here at the DC panel. Thank you. Thank you so much. Thank you. Happy to be here.